हो गया। Congratulations. थैंक यू। 5.5 साल के बाद आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल। इट्स अ कम्युनिटी, इट्स पीपल। 1 million is just not a number, it's the number of people who click the subscribe button to play. So this is a big thing for me. Sit by myself, talking to the Thing that you need to do is take any lip balm that you have and just apply it on your lips. The purpose of making this video is just to share with you guys that I have decided on going on a weight loss journey right now because I'm suffering from PCOD. मैंने अपना फेस वॉश किया है, फेस टोन किया है, फेस को मॉइस्चराइज किया है. A very important video, which is the comparison between the Maybelline Fit Me foundation and using the Lakme Invisible Finish foundation. It's much more thicker than the Lakme. कभी ना जैसे एक्ने के ऊपर जब लगाओगे आप, जैसे मैंने अभी लगाया, एक टिंगलिंग सेंसेशन होती है. आ गया, खाना खाना है अब मुझे. मैंने इंस्टाग्राम पे अभी 3-4 दिन पहले ये पोस्ट शेयर किया था. अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो तो ज़रूर फॉलो कीजिए वहाँ, तो उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी. तो इस वीडियो के थ्रू मैं थोड़ी मोटिवेट करने की कोशिश, क्योंकि आपको भी वेट लॉस और फिटनेस This is my husband. Hi, say hi to the camera, Utsav. I'm scared. Why? To his uncomfortable Utsav. इतने दिनों बाद क्यों आ रहे हैं? लॉकडाउन चल रहा था, अब क्या करें? थोड़ा तो देर ये बाद। भी लॉक्ड थे इसकी वजह से. अरे Anyway. नहीं यार, पतियों पे क्यों प्रेशर डाल रहे हो? तुम अच्छा बनाते हो ना, मैं नहीं बनाता. So I am your cause of your mental health disbalance. Imbalance. Okay. He's smooth. So why are you? Your hair is there, na? So this is presented to Simple Tips Anvesha for passing 1 lakh subscribers on YouTube. हाँ, मुझे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU से PhD अवार्ड कर दिया गया है फाइनली आफ्टर सो मेनी इयर्स एंड स्ट्रगल्स. आई हैव ट्रेन इन मल्टी स्टाइल योगा ट्रेनर, उस पर इंस्ट्रक्शन किया है 200 आवर्स. आई एम ऑल्सो सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइंस न्यूट्रिशन ISSA. Hi guys, so you saw that clip montage of all my old previous video and so glad it happened कि 2015 में मेरे अंदर से कोई आवाज़ कुछ आई थी और मैंने वो चैनल क्रिएट किया और मैंने वीडियो अपलोड की थी. अपनी मेरी पहली वीडियो थी बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग लैक्टोकैलामाइन ऑन माई स्किन. आई स्टिल रिमेंबर, बट वो डिलीट वीडियो भी नहीं है, वो डिलीट कर दिया मैंने. एंड जब मैंने नाम सोचा था ना चैनल का, सिंपल टिप्स अन्वेषा, अन्वेषा इज माई नेम, सिंपल टिप्स, मैंने सोचा था कि आई मेक मे बिल्ड अ वेरी स्मॉल ऑनलाइन कम्युनिटी एंड एक्सप्रेस माई थिंग्स. सो आई वॉज अ JNU PhD स्टूडेंट. मेरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, सो पॉलिटिक्स, पॉलिसीज, ये सब चीज़ों पे मेरी
नॉर्मली बातें होती थी. So I should never talk about lifestyle, skin care, beauty. All these things मैं इतना डिस्कस ऐसे करती भी नहीं थी. हमारे फ्रेंड सर्कल में भी we used to just chill and talk about politics or policies or jobs or education and studies and stuff like that. And later on, I got married in 2014, and after hostel, I was staying in Gurgaon with Utsav, and then for a brief time we also went and stayed in Dubai for a year. Actually दुबई में थी जब मुझे चैनल का आइडिया आया था. तब तो मैंने सोचा था मे बी एक स्मॉल कम्युनिटी होगी, क्योंकि दुबई में आई डिडंट हैव फ्रेंड्स. आई वाज जस्ट घर पे रह के पढ़ती थी बैठे बैठे. एंड ऑफकोर्स यूट्यूब उस टाइम सोर्स ऑफ इनकम का कोई लोचा ही नहीं था. मुझे पता था दिस इज़ नॉट अ करियर. मुझे पता था इसमें कुछ नहीं हो सकता है. मे बी बिकॉज आई डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स. पढ़ाई के साथ तो मैं बोर होती थी. सो आई वॉज थिंकिंग कि क्या कर सकते हैं, मेक अ कम्युनिटी, मे बी हैव सम फ्रेंड्स, लाइक माइंडेड पीपल, शेयर स्टफ्स, एक्सप्रेस एट द मोस्ट. मे बी किसी को हेल्प हो जाए छोटी छोटी चीज़ें, लाइफस्टाइल चीज़ों से, ब्यूटी स्किन केयर से. तो मैंने स्टार्ट किया था मेकअप, जो मुझे पसंद है, फैशन, लाइफस्टाइल, जनरल थिंग्स. Then we came back to India. Then I continued with my education. I also started working, and a lot of things happened there as well. And gradually करते 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 YouTube एक टाइम पास साइड प्रोफाइल होते होते कब ये actually I developed my passion. I found my passion in fitness happened 2017, जो genuinely मुझे, because I was unhealthy, unfit. I was in PCOD. जिनको PCOD उनको पता ही होगा क्या प्रॉब्लम होती है. Then 2017 I got serious about fitness. Then weight loss happened and I started sharing my things. Later on, मेरा JNU का PhD complete हो गया. I quit my job 2018 IDP. I quit that 2019. I submitted my JNU का thesis. 2021 I got awarded the doctor degree. फिर मैंने certification किया just to get more knowledge in things that I like, workouts and nutrition. I did that, and I also started taking my online classes. So things are happening. I also have then created a Bangla YouTube channel. Was born in Calcutta, raised up in a small town in West Bengal called Durgapur. और वहाँ के बाद मैं दिल्ली आई थी 12 के बाद, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छी थी. I got through Lady Shri Ram College, Delhi University. उसके बाद I cracked JNU. So I genuinely feel that through these videos there's some kind of value, some kind of knowledge that I can give. Vlogs more these days. You guys enjoy what I eat, kind of diet you like to eat, some kinds of workout. So I mix and match of everything, simple things that I love to do. I'm a very normal, simple girl, and I like simple things. I like simple people. I cannot gel into something very, very tough, very, very complicated. That gives me happiness. My mental peace, physical fit, and health, very important. I just hope with my content, I can help as many women out as possible, because my content is definitely women oriented. And I just want to say once again, I'm grateful to each and everybody who hit that red subscribe button and that bell ting 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 right next to it and became a part of Simple Tips and Vesha family. And I believe in hard work, of course, but I also believe in destiny. उस टाइम जब मैंने सोचा था मैं बहुत शर्माती थी. I was very ashamed कि should a PhD scholar, an academician, somebody into academics even think of putting such YouTube content, lifestyle content. But now I'm so happy. 2021, I know a couple of my JNU friends and all, friends like seniors, जो जिन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है इंस्टाग्राम में. मतलब वो जो हमें थी ना कि यार एक सीरियस वाला स्कॉलर थिंग, कैन यूट्यूब बी अ सीरियस थिंग बैक इन 2015, कैन यू बी अ यूट्यूबर, that scare of judgment, which also did happen amongst a lot of people, because back then nobody used to think this could be anything. But abhi to sab log hai YouTube, and I'm very happy that people are coming up and expressing themselves as much as possible on social media. It hasn't been the smoothest ride or journey for me, but in this pandemic situation, having all of you and my family and everybody around, family as in Utsav and my family in Calcutta and Durgapur, I'm just grateful to God for every little thing, everyone who watches my videos, any of my video, and the brands that I've collaborated and I work with, for people who come to my workout classes now, everybody that I've met. I'm just grateful for the opportunities that I'm getting, and I also hope that everybody's wishes come true. And have faith in yourself, work towards your goal, work towards your health. Very important, because if you are fit, healthy, you will be able to take care of your family, you will be take care of people around you. Otherwise, if you don't love yourself, don't take care of yourself, I don't think so you can do it with others. My ladies, I'm ending my video today here. I will come with the next vlog on what I made, what I eat. So that was my journey of 0 to 1 million subscribers on YouTube. I just want to say thank you for supporting Simple Tips and Vesha. I would like to create more content and sharing simple tips on fitness, health, beauty, skincare,
lifestyle vlogs, cooking, and spread happiness and joy. I'll see you guys soon in my next vlog. Bye.